Yesterday we were discussing this question. Show that the right circular cylinder of given surface मतलब given surface area, that is the meaning, given surface, that means given surface area. So इसका मतलब with that given surface area there are different types of, this is कल तो थोड़ा जल्दी बताया था, आज तो आपको समझ में आने के लिए बताता हूँ. With given surface area, given surface area मतलब constant, fixed, surface area is fixed. There are infinite number of cylinders are possible. With given surface area, there are infinite number of cylinders are possible. Like only thing is उसका जो length and और height and diameter change करेगा. जैसे तो मैंने एक जल्दी समझ में आने के लिए मैंने बोला था, जैसे एक ऐसे कि suppose area of rectangle. This is not related to this question, but area of rectangle fix किया उन्होंने. मान लीजिए area fixed, say 12 centimeters square. So we can have different rectangles see here, maybe this side is a square with side square possible nahi hai. Say 6 and 2, length 6, breadth 2, or height 6, breadth 2, नहीं तो 4 3, नहीं तो 4 3 or 3 4, whatever it is, 3 4 4 3, rough pictures. So like this we can have many rectangles. If the area is fixed, we can have, okay, one second. Merge. It can have like this. They say 12 1, नहीं तो 1 12, 4 3 6 2. Like these kind of different types of rectangles are possible if the area is fixed. Why say either be surface area of cylinder is fixed, so we can have different cylinders. Maybe the cylinder like this, or suppose surface area, so surface area is equal to, just example के लिए बता रहे, so 50. So we can reduce the width, but we can then increase the length. इधर भी surface area होगा 50 with the same surface area. Like this we can have many cylinders, like, or we increase the width again, but उस समय थोड़ा height कम कर दिया. Surface area may be 50. Like this we can have different cylinders
with a constant surface area. So that is what they're saying question here. Show that the side circular cylinder of given surface area of, so different cylinders are possible, and what we have to prove that इसमें से not only different infinite number of cylinders as possible, उसमें से जो maximum volume होगा, उसमें से जो maximum volume होगा जब height is equal to the diameter of the base. When height and diameter are equal, then out of that infinite number of cylinders with a surface area 50, the one whose height is equal to the diameter of the base will have the maximum volume. That is a question. Is इन तीनों का volume अलग अलग होगा. वैसे we can draw infinite number of right circular cylinder with surface area 50. उसमें से जो सिलेंडर उसका हाइट एंड डायमीटर सेम होगा उनके लिए होगा मैक्सिमम वॉल्यूम. दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव. डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? Yes, sir. Okay. Now, so we don't know what is the radius and height, so we can take let R, कोई भी figure you can take, let R be the base general and H is the height of the cylinder. Let R be the radius and H be the height of the cylinder, right circular cylinder. So surface area of the cylinder, you have studied in 10th class. The formula is 2 pi r square, 2 base is there, upper 2 face plus then lateral face ka 2 pi r h, 2 pi r h. But keep in mind this is a fixed number, this is constant. R and H are varying, but this total value is a constant. मैंने example के लिए ऐसे 50 बोला, it is a constant. Now, for this kind of question, the technique is, or how we have to approach this question is, we have to find a formula for the thing which is to be maximized or minimized. So here we have to maximize the volume. So volume is equal to, volume of a cylinder is equal to pi r square h. So here you can see that there are two variables, radius and height. In both radius and height are variables, it will change. So second step, what I told you is we have to change this into one variable using the given fact. So इधर एक fact दिया है कि surface area is constant. So उसमें से आपको ये idea मिलेगा कि yes 2 pi r h is equal to surface area को मैंने s डिनोट किया, s minus 2 pi r square. So उसमें से आपको h का वैल्यू मिलेगा s minus 2 pi r square divided by 2 pi r. So here you can substitute back that value. So volume is equal to pi r square into h. H is s minus 2 pi r square divided by 2 pi r. So pi r cancel हो जाएगा इधर से, pi cancel हो जाएगा, 1 r cancel हो जाएगा, रिमेनिंग आपको मिलेगा r by 2 into s minus 2 pi r square or you can say volume is equal to r into s, that is s r divided by 2 minus
r से मल्टीप्लाई कर दो, 2 कैंसिल हो जाएगा, देन पाई r क्यूब. So now we got the formula for the thing which is to be maximized or minimized. अभी हमें पता है कि for maxima or minima, for maxima or minima, dv by dr, either variable is r, so I'm using dv by dr, should be 0, because maximum or minimum exist only at the critical points if there is any maximum or minimum. उसके अलावा कोई भी पॉइंट में कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम डज नॉट एक्सिस्ट. क्लोज इंटरवल है तो मे बी n पॉइंट्स में भी एक्सिस्ट करेगा, बट अदरवाइज maximum or minimum exists only at the critical point. So we have to find the derivative. That is the next step. So dv by dr is equal to dv by dr is equal to, देखो s is constant, so s by 2 is constant because given surface area मतलब surface area is constant. Then derivative of r with respect to r is 1 minus pi is constant, r cube derivative is 3 r square. Now here for maxima or minima, I told you derivative is equal to 0. That implies s by 2 minus 3 pi r square is equal to 0. That means 3 pi r square is equal to s by 2, or r square is equal to s by 6 pi, or r is equal to under root s divided by 6 pi. So you got the critical point. There is only one critical point, which is under root s divided by 6 pi. Now अभी इस क्रिटिकल पॉइंट में हो सकते हैं वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, हो सकते हैं वॉल्यूम मिनिमम होगा, हो सकते इट मे बी ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. So that we have to prove. So for that you have to find the second derivative. We are using the second derivative test. So d square v by d r square. So dv by dr already आपको इधर मिला था s by 2. So s by 2 derivative, it is constant derivative 0 minus 3 pi r square. R square का derivative 2r. So 3 into 2 6 pi r. अभी हमें सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर at r is equal to under root s divided by 6 pi. So which is equal to minus 6 into pi into r का वैल्यू under root 6 divided s divided by 6 pi. So anyway, under root s divided by 6 pi is a positive quantity. Positive into negative, it is negative. So हमने prove किया second derivative negative. So that implies second derivative negative मतलब, so that implies volume is maximum at r is equal to under root s divided by 6 pi. So हमने ये प्रूफ किया कि at that critical point volume is maximum. बट हमारा क्वेश्चन उतना तक नहीं था. हमारे क्वेश्चन में यही बोल रहे थे कि volume is maximum when height is equal to the diameter of the base. That is what we need to prove. Okay. So we have to find the height. So इधर आपके पास height, therefore, तो इधर लेफ्ट साइड में मैं लिखूंगा थोड़ा, therefore स्पेस नहीं है इसलिए इधर लिख रहे हैं, therefore height is equal to ये आपके पास है s minus 2 pi r square divided by
2 pi r. So which is equal to s minus 2 pi r is s divided by 6 pi under root. So उसका square मतलब it is s divided by 6 pi, square root चला जाएगा, divided by 2 pi r. So 2 pi r is equal to under root s divided by 6 pi. So इधर आप देखेंगे तो इधर आप से पाई कट कर सकते हैं, पाई कट हो जाएगा, तो आपको ये मिलेगा s माइनस s by 6 s माइनस बराबर है ना 2 pi s divided by s by 3 s by 3 divided by one second. इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पाई इंटू एस, 6 पाई एस माइनस 2 पाई एस, सो आपको ऐसे मिलेगा 6 पाई दैट इज 4 पाई एस डिवाइडेड बाय 6 पाई, 4 पाई एस डिवाइडेड बाय 6 पाई divided by the whole divided by 2 pi into under root s divided by 6 pi. Here looking at, so 4 pi s divided by 6 pi into, so divide matlab we have to multiply with the reciprocal, so it is 2 pi into root s, so root 6 pi ऊपर जाएगा, 2 pi into root s नीचे आएगा. So now we can see that pi कैंसिल होगा, 2 4 कैंसिल होगा, 2 आएगा, so it is 2 and इधर root 6 pi, इधर 6 pi, so कैंसिल होके नीचे root 6 pi आएगा, इधर yes root s, दोनों कैंसिल होके ऊपर root s आएगा, so ऐसे मिलेगा root s ऊपर, क्योंकि root s is root s into root s divided by root 6 pi. That means this is 2 into under root s divided by 6 pi, and that is nothing but 2 r. Clear? So we have proved that, so the volume is maximum at r is equal to under root 6 s divided by 6 pi, and when r is equal to under root s divided by 6 pi, we proved that the height is equal to 2 times the radius. 2 times radius matlab it is the diameter. 2 times radius, that 2 times radius 2r, that means that is equal to the diameter. That is the question. So this is what we need to prove. We have to prove that a right circular cylinder of given surface area and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base. So हमने प्रूव किया था वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट द पॉइंट r is equal to s divided by under root s divided by 6 pi, and उसी पॉइंट में height is equal to diameter करके प्रूव किया, and that is what the question. So these types of questions will be asked for 6 marks. Is it clear? Any doubt relating this question? So
all the questions of this particular type is like this only. First thing, you have to make, you have to find a formula for the thing which is to be maximized or minimized. हो सकते हैं एक ही वेरिएबल में होगा that formula, otherwise maybe more than one variable. If it is more than yes. सर यहाँ पे सरफेस एरिया कांस्टेंट नहीं आ रहा सर. सरफेस एरिया कांस्टेंट नहीं आ रहा. किधर? या इस क्वेश्चन में सर कांस्टेंट है ना? नहीं आ रहा सर, क्योंकि सर सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर आ रहा है सर. सी सरफेस एरिया 50 आने, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने 50 बोला, सो ऐसे उन्होंने बोला सरफेस एरिया इज फिक्स्ड, दैट मींस सरफेस एरिया कैन बी 50 और व्हाटएवर इट इज, देन सो ऐसे तो सरफेस, हाँ बोलो सर. हमने सॉल्व करने पर वो 6 पाई आर स्क्वायर आ रहा है ना सर, वो तो कांस्टेंट नहीं है ना सर. ना व्हेन रेडियस एंड देखो अलग अलग वैल्यूज ऑफ आर एंड एच दे देंगे तो आपको सेम आएगा ना. मतलब जैसे आप इधर आर के, जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन उन्होंने बोला कि इट इज फिक्स, ऐसे इधर देखो एरिया, इसे सिंपल समझ में आने के लिए मैंने बोला कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 12, इट इज गिवन दैट इट इज फिक्स्ड. सो व्हेन यू टेक लेंथ इज 12 एंड हाइट इज breadth is 1, you will get the area 12. कोई भी वैल्यू देंगे तो 12 नहीं मिलेगा. जैसे when you take the length is 4, breadth is 3, you will get the area 12. When you take the length is 6 and breadth is 2, you will get the area 12. Likewise, either when you give some particular values to R and H, you should get 50 surface area. मतलब वो समझ गया, पर सर यहाँ पे देखिए ना, ये इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर आ रहा है ना, तो अगर आर की वैल्यू पुट करेंगे तो वो तो वेरी हो जाएगा ना. अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे आर की तो H is equal to 2R. So आप ओके सिर्फ फिक्स करेंगे 2R 2 to 4 pi R square, इसमें 6 pi R square आ रहे. Okay. Hello? Yes. 1 second. So it is not like what it says is surface area is not 6 pi r square. See, आपका क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया. Surface area is not 6 pi r because that is the surface area when the volume is maximum. At that time also surface area is 6 pi r square. For see, when r is equal to h is equal to 2r, when you give, you will get surface area is equal to 6 pi r square. So that means you are getting the surface area at that time for that particular r and particular h. वैसे बहुत सारा r and h है जो surface area जब निकालेगा 50 आएगा करके. जब आप r is equal h is equal to 2r देगा तभी आपको when you give r is equal to, when you give h is equal to 2r, in that particular case also you will get the surface area 50. देखिए for example 50 मतलब constant बोल रहे हैं, constant suppose 50, so surface area is 50 constant. So when you give h is equal to 2r, then also you will get the surface area 50. इसके अलावा बहुत सारा cases है when you give different values of r and h. This is only one particular case. This is the case where the volume is maximum. H is equal to 2r, that time the volume is maximum. It is not a general formula for surface area because this, when h is equal to 2r, in that particular case, when h is equal to 2r, surface area is okay. In this particular case आपने okay बोला surface area मिलेगा 6 pi r square, and that 6 pi r square should be whatever the constant given, 60, 50. So this is only one case. This is the case where the volume is maximum. When the volume is maximum, that time height is equal to 2r. Sanket, did you get the point? सर यहाँ पे सरफेस एरिया और हाइट का तो कुछ नहीं आ रहा है सर. अरे this is the case where when the volume, when h is equal to 2r, तभी
सर एक बार h इज इक्वल टू समथिंग करके बताइए ना सर एक बार। तो वो तो तो ढूंढना अगर पड़ेगा ना चेंज ये बाबा, जैसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमको सर्च करना पड़ेगा खुद, सरफेस एरिया 50 गिवन सरफेस ऐसे करके। सो वी हैव टू चेक एंड फाइंड, लाइक इन्फिनिट नंबर ऑफ केसेस आर देयर। सो वो वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करके निकालना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो दिस केस आप व्हाट यू आर सेइंग इज when we put h is equal to 2r, what will happen, surface area becomes 6 pi r square। so उसके लिए एक ही वैल्यू आ रहे करके बोल रहे, isn't it? नहीं But सर, बोलो। मतलब मेरा कहना है कि हम्म ये 6 पायर स्क्वायर तो हमें तो आपने तो बताया कि ये कांस्टेंट है सरफेस एरिया, मतलब 6 पायर स्क्वायर तो कांस्टेंट नहीं लगता है सर, क्योंकि 6 पाई उसको आर विथ स्क्वायर, रिस्पेक्ट इधर देखो विथ 6 रिस्पेक्ट 6 करना पाई आर तो। स्क्वायर कांस्टेंट है, मतलब इधर जो गिवन सरफेस है, गिवन सरफेस एरिया, उन्होंने बोला सरफेस एरिया 50 है करके, उसका मतलब 6 पाई आर स्क्वायर कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। तो उसी आर होगा। It is a particular, just h is equal to 2r, it is a particular case, like just at this time when h is equal to 2r, volume becomes maximum। when height is equal to the diameter, the volume becomes maximum hoga, that is the case। so like that infinite number of cases are there, there are infinite pairs of values like r and h, infinite pairs, infinite numbers for r and h you will get, where the surface area is equal to 50 for example say। ऐसे आपको infinite cases मिलेगा, infinite number of cases मिलेगा when you put r is equal to, जैसे for example बोलेंगे तो just for example बोलेंगे तो ये करेक्ट 50 नहीं है, जब मैं आपके लिए समझने के लिए, जैसे r is equal to 3, height is equal to suppose 5, so आपको surface area 50 मिलेगा। maybe r is equal to 2, height is equal to 7, so हो सकते हैं आपको surface area 50 मिलेगा। वैसे different values of r and h are there, when you find the surface area you will get a particular constant, I say। so then so उसमें से जब वॉल्यूम, so with this r and h you can find the volume using the formula pi r square h, so you will get different volumes। so उसमें से जो maximum volume आएगा when the height is equal to 2 times the radius, that means if radius is equal to say some 4 है तो height h होना चाहिए। उसी situation में आपको हो सकता है surface area 50 मिलेगा, but that time this volume will be maximum। You didn't get that? समझ गया सर। समझ गए सही में? यस सर। ओके इधर मैंने ऐसे वैल्यूज बोला है r and h के लिए, बट देयर आर different pairs, so that we have to solve it and find, maybe we have to put it in a calculator somewhere, we have to find it out। so also बहुत सारा 2 pi r square plus 2 pi r इतना कैलकुलेट करना है, इसलिए मैंने इधर एक सिंपल रेक्टेंगल का बोलेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे 12 लेंथ 12 ब्रेड्थ 1 एरिया 12 आएगा, लेंथ 4 ब्रेड्थ 3 एरिया 12 आएगा, लेंथ 6 ब्रेड्थ 2 एरिया 12 आएगा। ऐसे डिफरेंट लेंथ एंड ब्रेड्थ आर देयर। सो उसमें से जब एरिया मैक्सिमम आएगा तो पता है कौन सा के लिए एरिया मैक्सिमम आएगा, लेंथ विल बी 1 सेकंड 12 4 2 सर हाँ सर अगर सरफेस एरिया कांस्टेंट है तो वॉल्यूम तो 0 हो जाएगा ना? सरफेस एरिया कांस्टेंट है तो वॉल्यूम 0 होता है ना शायद, क्योंकि 0 कैसे होते हैं? वॉल्यूम dv/dr इज इक्वल टू सरफेस एरिया होता है ना सर? dv by dr नहीं, surface area 2 pi r square plus 2 pi r h, it is a fixed thing here। नहीं सर, मतलब डिफरेंशिएट में कुछ नहीं है कि उसके लिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। सो जो वॉल्यूम, दैट्स अ फंक्शन, इट इज हैविंग टू वेरिएबल r and h, so we made it into one variable, okay, then so we got a formula for volume, so this is the function। so उसका मैक्सिमम वैल्यू किधर हो रहे, so उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, कोई भी फंक्शन के लिए मैक्सिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू होगा एट द क्रिटिकल पॉइंट्स। इसके अलावा कोई भी पॉइंट में फंक्शन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम नहीं होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स में होगा मैक्सिमम एक्सेस कर रहे तो।
एंड क्रिटिकल पॉइंट्स आर द पॉइंट्स वेयर द डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0. सो उसके लिए हमने डेरिवेटिव निकाला, वॉल्यूम का डेरिवेटिव निकाला एंड वॉल्यूम का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कर दिया, तो हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिला r इज इक्वल टू अंडर रूट s डिवाइडेड बाई 6 पाई. उसका मतलब दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट, अंडर रूट s डिवाइडेड बाई 6 पाई. उस पॉइंट में हो सकते वॉल्यूम मैक्सिमम होगा. अभी हम आंख बंद करके नहीं बोल सकते मैक्सिमम है क्या मिनिमम है, बिकॉज वी डोंट नो द शेप ऑफ द ग्राफ एंड ऑल दोस थिंग्स. At that point, the volume may be maximum, the volume may be minimum. हो सकते, that may be a point of inflection also. So for that we checked using second derivative test. We found the second derivative, and at that particular point we checked the sign of the second derivative, and it is less than 0. So when the second derivative is less than 0 at a particular point, as per second derivative test, the volume is whatever the function is maximum at that particular point. And we have to prove that at that time the height will be equal to, at that particular time when the volume is maximum, at that particular time the height will be equal to the diameter of the base. So at that particular time हमने इधर height निकाला, हमने proof किया the height is equal to the radius, or 2 times the radius, that means the diameter. Is it clear? Okay sir. Yeah. Like simple case also, like with a given area of a rectangle, you can see that different possibilities are there, length, breadth. Similarly here surface area is fixed. Okay, 50 surface area आना चाहिए. इधर भी rectangle के केस में एरिया है, so surface area 50 आना चाहिए. So सर मतलब मुझे वो इसलिए लगा क्योंकि वो सर वो 6 पाई स्क्वायर मतलब उसका डिफरेंशिएट किया तो वो कांस्टेंट नहीं आता ना सर, इसलिए ऐसा लगा सर. No, 6 pi r square is the particular case when the height is equal to diameter. उसी समय का surface area है ना. तो जैसे surface area निकालने का फॉर्मूला 2 pi r square plus 2 pi rh. This is the formula to find the surface area. डाउट पूछना अच्छा है, उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं. This is the formula for surface area. See, 2 pi r square plus 2 pi rh. So इधर आप r and h को अलग अलग वैल्यूज, you have to give different values to r and h. So आपको 50 ऐसे कोई भी वैल्यू देंगे तो नहीं होगा, ऐसे बहुत सारा पेयर्स होगा, आप r and h पर्टिकुलर वैल्यू देंगे तो आपको 50 एक कांस्टेंट मिलेगा. This height 6 pi r square कब आएगा, जब that maximum case when volume is maximum, at that time height is equal to 2r. That is why surface area 6 pi r square मिला. हमेशा surface area 6 pi r square नहीं है, surface area 2 pi r square plus 2 pi r h. This is the surface area. 6 pi r square is the surface area when the height is equal to 2 times the diameter. Only that particular case. Clear? Yes. Okay. So these type of questions are the many questions. These types of questions will come for 6 months. So in the coming classes also we'll do 2-3 questions of this type. Then only we will move to the next chapter, because this is very important for the exam. Okay. राहुल कोयते है क्या क्लास में? राहुल कोयते? Yes sir,